अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एक सर्वे के मुताबिक वी यूज टेक्नोलॉजी मोर देन 12 आवर्स अ डे, 4 days of our week. That makes more than 48 hours of our week. Realistically, this figure would be more than that. ये सब हम जानते हैं क्योंकि हर वक्त हमारे सेल फोन्स हमारे हाथ में होते हैं। और ये एक डायलेमा है कि इवन जब हमारे पेरेंट्स भी हमसे बात कर रहे होते हैं, हम अपने सेल फोन्स में ही बिजी होते हैं। इवन शॉपिंग, जिसका कुछ साल पहले तक इतना ज़्यादा ऑनलाइन की शॉपिंग का ट्रेंड नहीं था, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इवन कि लोकल ऑनलाइन वेबसाइट्स ही नहीं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हैं और प्रोडक्ट्स मंगवा चुके हैं। Simply, you have to sit on your computer, you have to select the product online, you have to pay online, and your product is delivered at your doorstep. कस्टमर्स की इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद जो कि ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रही है, इस वजह से दे हैव बिकम अ ग्लोबल कम्युनिटी विद कॉमन एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट्स। हम एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते गोइंग टू वर्क और गोइंग एनीवेयर एल्स विदाउट आवर सेल फोन्स इन आवर हैंड और विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं दैट हैज रीशेप्ड बिजनेसेस टुवर्ड्स दिस ग्लोबल कम्युनिटी? In this module, we are going to discuss that digital forces reshaping business and society, then digital transformation of businesses, and at the end, we are specifically going to discuss digital five forces. So, firstly, if we generally talk about digital forces reshaping business and society, we can say that in the last decade, we have seen impressive improvements in information, communication, and connectivity. अब उससे क्या हुआ कि both businesses established और startups, they took advantage of low price hardwares and softwares and at the same time global connectivity to adapt themselves to the global business, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को इस तरह मोल्ड कर सकें और इस तरह से ऑपरेट कर सकें कि दे कैन ऑपरेट विदाउट द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड फंक्शन, which is the need of the hour these days. अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस की बात करें और हम कस्टमर्स साइट पे देखें, कस्टमर्स ख़ास तौर पे मोबाइल यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वी कैन से एक्सपर्ट्स बन गए हैं इन प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट यूज़। अगर सिर्फ फूड ब्लॉगिंग की बात करें या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट्स की बात करें, कस्टमर्स हैव सो मच ऑप्शंस अवेलेबल, दे कांट डिसाइड वेयर टू गो, व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सिलेक्ट। अब इससे कंपनीज के लिए क्या चैलेंज है? जो ट्रेडिशनली ऑपरेट कर रही हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ये एक चैलेंज है कि कैसे ट्रेडिशनल भी अगर मैनेज करना है उसको भी साथ कैसे मैनेज करें, लेकिन डिजिटल की तरफ भी शिफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और वहीं से ऑर्डर भी करते हैं प्रोडक्ट्स और ख़रीदते हैं। तो कंपनीज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो इनोवेट करें ताकि वो एट द सेम टाइम वैल्यू क्रिएशन भी करें और कंपेटिटिव एडवांटेज भी ले सकें। कस्टमर्स यूजुअली फूड, शॉपिंग, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन, ये सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। उसके अलावा हाउस होल्ड मैनेजमेंट थिंग्स भी ऑनलाइन करते हैं। कंपनीज के लिए चैलेंज है वो कैसे इनोवेट करें और कैसे डिफ्रेंशिएट करें देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स एंड ये सब कुछ कॉस्ट इफेक्टिव रहते हुए करें। स्टार्टअप्स के लिए ये करना आसान है निस्बतन, जो कंपनीज ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल ऊबर है, ये एक स्टार्टअप से ही डिजिटल मॉडल की तरफ है बिजनेस और ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल हमारे सामने है। इसी तरह लीडिंग कंपनीज, उनको भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा पार्ट ऑफ देयर बिजनेस या all of the business, लेकिन at the same time they focus on two things, that is reshaping customer value proposition and transforming operations digitally for greater customer interaction. Next we have digital five forces. Number one is mobility,
second is big data, third social media, cloud, and artificial intelligence and robotics. These are going to be discussed in detail in our next video. Thank you. So we are back with digital five forces. Today, the digital forces reshaping business are so strong that we can argue that one day all businesses might become technology businesses. We can't wait for even days or months for things to happen. We must respond to the information that is generated within seconds, not even within minutes. The heart of digital technology is connecting the unconnected. It is not about connecting people to things, or things to things. It is also about what happens when they are connected. Companies are coping with this change so rapidly. So, the digital five forces, number one, we have mobility. Every person is mobile these days. They can go anywhere and connect to one another. Even we know people who have online businesses and they are traveling abroad and going anywhere, and they can operate their business with the cell phone or any other device they have with the internet, of course. वी हैव बिग डाटा. हम जानते हैं कि जब हम गूगल या किसी और ब्राउज़र पे वेबसाइट सर्च करते हैं, एट द बैक एंड हिस्ट्री में उसका रिकॉर्ड ज़रूर जमा हो रहा होता है. उसके अलावा ऑनलाइन भी जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड बैनर एड्स देखना शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. सो व्हेन वी आर सोशलाइजिंग, व्हेन वी आर शॉपिंग ऑनलाइन, अ बिग डाटा is created at the back end, and companies can use this data to target their customers. सोशल मीडिया, हम सबका फेसबुक पे ज़रूर अकाउंट है, एंड वी शेयर आर पिक्चर्स एंड वी शेयर आर इंटरेस्ट्स. तो कंपनीज इस चीज़ को यूज़ करती हैं, इस इंफॉर्मेशन को. फॉर एग्जांपल, अगर हमने फेसबुक या किसी भी और सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया दैट वी हैव इंटरेस्ट इन मूवीज़, तो हम न्यू एंड अपकमिंग मूवीज़ के एड्स अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे देखना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. Cloud computing. Cloud is basically an online storage software, we can say. There are many other softwares available. For example, Dropbox hai. We can store our files and media online. We don't have to restrict on a single device. We can store it online, and we can access it online anywhere we go. We don't have to be physically present somewhere to access some file or some media that we want to share with someone. We can access it through internet anywhere we go, through any device. And at the end, we have artificial intelligence or robotics. Artificial intelligence kya hai? That is machines operating intelligently. They can be robotics, they can be any software, they can be any other machine. अब उससे क्या होता है कि they can help you out in your future purchases as well. They can communicate with you in your own language. So this was all about five forces, and in the coming series of videos, we are going to discuss how businesses have reshaped with the specific functions. So till then, thank you.